हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11th के लिए जो हमने टॉपिक लिया है आज वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमने पढ़े, इनकी डेफिनेशन। व्हाट आर प्रोटीन्स? दीज आर द most abundant intracellular organic biomolecules, and the word protein was coined by the J. Brussels in 1838. Actually, proteins are polymers of amino acids and are interlinked by the peptide bonds formed by the dehydration synthesis. So they are macro biomolecules of high molecular weight ranging from 4,500 daltons in ACTH to 40 million daltons of TMV. These are the scales in which we can measure them. आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अगर हम शक्ल की बुनियाद पर प्रोटीन्स को देखेंगे, हम चूँकि बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमें एक दो पॉइंट्स इसमें और भी पढ़ने हैं, बाद में हम जाके दूसरा टॉपिक लेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ the proteins are divided into two categories. Number first, globular proteins, and number second, fibrous proteins. So on the basis of chemical composition, proteins are divided into three categories: simple proteins, conjugate proteins, and derived proteins. On the basis of shape अगर हम पढ़ेंगे तो दो हिस्से, दो parts, global proteins and fibrous proteins. And on the basis of chemical composition, proteins are divided into three categories: simple proteins, conjugate proteins, and derived proteins. पहला आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे on the basis of chemical composition. ले लो simple proteins. These proteins are formed of only amino acids. So on the hydrolysis, these yield only amino acids are their derivatives. यम हसा गई तम सिंपल प्रोटीन्स गई ऑन द बेस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। यम हसा प्रोटीन्स त्रे हिस्से गसान: सिंपल प्रोटीन्स, कंजुगेटेड प्रोटीन्स तो डेराइव्ड प्रोटीन्स। यम सिंपल प्रोटीन्स गई तम प्रोटीन्स यमन मज सिर्फ अमाइनो एसिड युत आसि। इस पर हाइड्रोलिसिस करान, दीज यील्ड ऑनली अमाइनो एसिड्स आर देयर डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यून्स, प्रोलेमिन, प्रोटोएमाइन्स, हिस्टोन्स, scleroproteins, collagens of white fibers, alpha-hurtin of epidermal derivatives, certain enzymes like ribonuclease and chromatrypsinogen. These are further subdivided on the basis of their solubility. गो यम गए सिंपल प्रोटीन्स, यमन मज सिर्फ अमाइनो एसिड्स आसन। तिम प्रोटीन्स यमन मज अमाइनो एसिड्स आसन, तो इस पर तुम हाइड्रोलाइज करो तिम हसा दिन तौर वापस अमाइनो एसिड्स। दोम गो कंजुगेटेड प्रोटीन्स. These are proteins. In these proteins, a protein is associated with a non-proteinaceous compound called prosthetic group. Yim gei tim proteins yim zana associate asan, link asan, ya watan beha asan with the non-proteinaceous compounds. Taman chhe sona prosthetic group. Yani yele hasa kah protein kuni non-proteinaceous group sait associate ase, which is essential for biological functioning of proteins. On the basis of prosthetic groups, the conjugated proteins are classified into following subcategories. Categories. And derived proteins. These are the products of denaturation or partial digestion of proteins. ठीक है? यम गए derived proteins. Inshallah, next lecture में पढ़ो इस difference between global proteins and fibrous proteins. In a protein types on the basis of shape. चूँकि स्क्रीन पे पूरा आमुत कह, इंशाल्लाह इस पर नेक्स्ट लेक्चरस मज डिफरेंस बिटवीन या व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ बॉन्ड्स, सॉल्युबिलिटी, कंट्रैक्टाइलिटी, एग्जांपल्स. So thank you for watching me on this